अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करें, सो वी हैव टू हैव अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले जो टाइप है विच इज़ वेरी सिंपल, रो मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, रो मैट्रिक्स it is very simple. A matrix is called a row matrix if it has only one row. So we can write its definition. The definition of this matrix is a matrix is called a row matrix if it has only one row. Okay, so such type of matrices are to be called a row matrix. For example, जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. So let's say a matrix M, इसके अंदर like A and B कोई भी नंबर हो, तो because it has only one row, okay, and all the verticals numbers are to be called a row. So इसके अंदर एक ही रो है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि it is a row matrix. Okay, there's another example, suppose a matrix N. Okay, so like it's 2, so it has only one row, so it doesn't necessary it should have also one column. So जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो कॉलम थे, सो यहाँ पर एक ही कॉलम है, एक ही रो है, बस रो मैट्रिक्स के लिए एक रो का होना ज़रूरी है. इन द कॉलम मैट्रिक्स द डेफिनेशन इसके लिए भी सेम होगी. अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम. सो वो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल so matrix A is said to be a column matrix if it has only one column. so यहाँ हमारे पास क्या है कि एक ही कॉलम है हमारे पास. all the verticals numbers are to be called a column. so एक ही कॉलम है, so इस टाइप के जो मैट्रिसेस हैं सारे, वो आप हमारे क्या कहलाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे. सो उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है रेक्टेंगुलर. सो जो रेक्टेंगुलर की जो किसी भी रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस होती हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, इनकी लेंथ और जो वेट है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती. सो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं है. सपोज हम सपोज कर सकते हैं इसकी लेंथ 4 है एंड इसकी विड्थ इसकी 2 है. सो हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अ मैट्रिक्स M or a matrix M is said to be a rectangular matrix. A matrix M is said to be a rectangular matrix. A rectangular matrix if it has different, or we can say if it has
Okay, we can say it's same way. If it has different number of rows and column, number of rows and column, सो इस टाइप के जो मैट्रिसेस होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होंगे. सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है आर, जिसके अंदर हम 1 2, सो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर 2 by 1 है. सो अगर तो ऑर्डर एक जैसा नहीं है, लाइक 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 नहीं है. सो अगर इसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम है तो उस टाइप के जो मैट्रिसेस हैं सारे हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे. सो वी कैन टेक अनदर एग्जांपल विथ हैविंग द डिफरेंट ऑर्डर. सो सपोज हमारे पास है 1 2 3 4 5 6. So as it has also different number of rows and columns. इसके पास 2 rows हैं और 3 columns हैं. So इसका ऑर्डर भी होगा 2 by 3. So ये भी हमारे पास क्या होगा, it's also another example for rectangular matrix. So next type है हमारे पास square matrix. Square shape क्या होती है जिसकी डायमेंशन सेम होती है. So ये हमारे पास एक square shape है. This is we have square. So you don't need to just memorize it, you know already what is square. So having the same dimension, so equal dimension. So a matrix M is said to be a square matrix if it has same number of rows and column. Okay, so if it has same number of rows and column, same number of rows and column. So इस तरह के मैट्रिक्स हमारे क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स. वी कैन जस्ट टेक सम एग्जांपल. सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज एक मैट्रिक्स एल है, तो बस 1 2 3 4. So as it has the order 2 by 2, so ये मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. और स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो सेम होगी 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 and n by n. Okay, so all these type of matrices are to be called square matrices. So नेक्स्ट टाइप्स हैं हमारे पास नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि ये बंदा तो नल है, नील है. सो नील का मतलब होता है ज़ीरो. सो ऐसे मैट्रिसेस, अ मैट्रिक्स M is said to be a null matrix. A matrix M is said to be a null matrix if its all entries are 0. Okay, you can take a lot of example. Okay, a null matrix could be a rectangular, a square matrix. Okay, that doesn't matter. So a matrix A, suppose, is 0, it's a null matrix. Suppose a matrix B is like 0 0 0 0, it is also a null matrix. So next हमारे पास टाइप है transpose of a matrix. So how we can take the transport of a matrix? So it's also another very easy.
So to change a transpose of a matrix means we convert the rows into column and column into rows. Okay, so if we transpose of a matrix means if we change the rows into column and vice versa, means into columns and column into rows. Into rows, it's said to be a transpose of a matrix. It's mean we have taken the transpose of a matrix. Okay, जैसा कि हम let's have an example. So suppose एक हमारे पास मैट्रिक्स है D, मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 5. सो हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं. लेट्स ट्रांसपोज एक स्मॉल टी से हम शो करते हैं. तो जिस भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है उसके ऊपर आपने एक स्मॉल टी लगा देना है. जब हम इसका आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज फॉर दिस मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास रोज़ में क्या है 1 2 है, तो उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे. और 3 5 हमारे पास कॉलम में है, और रोज़ में है, तो इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे. सो इट विल बी इंटू 3 इंटू 5. सो इस तरह हम डजेंट मैटर किस स्क्वायर मैट्रिक्स है, इतना बड़ा मैट्रिक्स है, छोटा मैट्रिक्स है. सो हमने जस्ट उसकी जो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना या फिर कॉलम्स को रोज़ में कर देना. नेक्स्ट टाइप हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. सो व्हाट डज इट मीन नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स? सो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है हमने किसी भी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर देना है. किसी भी मैट्रिक्स ए को कुछ भी ए है या कोई और मैट्रिक्स है. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए और लाइक इट्स 5 2 7 -3. ओके, इसकी डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल एज इट इज़ विद इट्स नेम. negative, if we multiply a negative with any of the matrix, okay, these type of matrices are said to be a negative of a matrix. Okay, so इसमें हम क्या, if we want to find the negative of for this matrix for A, okay, so what we need to do, we just need to multiply with negative. So जब हम इसको negative से multiply करेंगे, it's mean कि इसकी सारी की सारी एंट्रीज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी नेगेटिव के साथ. सो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये साइन है जो आपका इनसाइड ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा. तो 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 में, पॉजिटिव 7 नेगेटिव 7 में, और नेगेटिव 3 पॉजिटिव 3 बन जाएगा. ऑल द साइंस विल बी चेंज. सो ये 7 टाइप्स थी हमारी मैट्रिसेस की. जो फर्दर टाइप्स हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो अक्सर डेफिनेशन में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, और उससे रेलेवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में पेपर में पूछा जाता है. सो विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.